Hello children, I'm Payal and this one is our part 2 वीडियो ओके तो हमने लास्ट में कहाँ तक के पढ़ा था we already study about the different types of the landform like desert then mountains, plateau, plains. We already discussed about these. Okay. Now we already know about the Mount Everest. Mount Everest have the highest peak in this world. Okay. That one Himalayas are located in Nepal. Some mountains are formed who to a large landmass push again and each other. They are called a fold mountain. Suppose children, here is a one plate and here is the one plate. If you forcefully, here will be force apply and here will be force apply. You can take a one paper. Example, wait. See, I'm taking example this one paper. Okay. And if I force here to here, so what will be happen? ये पोर्शन क्या होगा ऊपर उठने लगेगा राइट तो ऐसे से ही क्या होता है फॉर्मेशन होता है किस चीज का इफ आई अप्लाई द फोर्स फ्रॉम इन राइट और लेफ्ट साइड सो सी क्या हो रहा है ये जो मिडल पोर्शन इट विल गो अप राइट तो ऐसे ही क्या होता है दिस टाइप सेम इट विल हैपन विथ फोल्ड माउंटेन में भी ऐसा ही होता है एज इट इज सेम तो इसी तरीके से फॉर्मेशन किसका होता है फोल्ड माउंटेन्स का होता है द हिमालयाज एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड अल्पाज यूरोप आर fold mountain so where we can found it this fold mountain where you can see this so one place Himalayas there you can see the fold mountain and Rockies mountain that one is the made by a rock in North America you can see the in Alps in Europe are the fold mountain so here you can see this example of this mountain some mountains are formed when a molten or rock a deep inside of the earth rise in the surface from volcano so we know children already see here if you see the down formation of volcano mountain so one thing is the whenever if volcano blast okay and magma it will comes up then some month or year then will be something formation will be happen day by day this magma comes out and will be a cool so these types of the one mountain formation will happen some mountains are formed in molten rock तो जो कुछ कुछ माउंटेन्स कैसे बनते हैं जो मैग्मा होता है ये जो हमारा वोल्केनो हो गया जिसे हम हिंदी में हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं हिंदी में हम इसे ज्वालामुखी कहते हैं ना तो ज्वालामुखी क्या होता है इनसाइड से कैसा होता है ब्लास्ट होता है तो ऊपर में क्या होता है बहुत सारा जो लावा होता है मैग्मा हम जिसे कहते हैं वो आता है और जो रॉक्स होते हैं जो पत्थर होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं तो फिर क्या होता है उसका जो सरफेस है वो फॉर्मिंग होने लगता है वोल्केनो दे आर called volcanic mountain and these types of the mountain we can call the volcanic mountain
Example of this mountain: Mount Fuji, Japan, and Mount Vesuvius in Italy are volcanic mountain. So these are the both example of the volcanic mountain. Another kind of the mountain is the block mountain. Block mountain it means क्या होता है, जो ये टू प्लेट्स होती है, फोर्स लगता है और बीच में बीच वाला पोर्शन क्या होता है, उठ जाता है, इसी को क्या बोलेंगे, अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन. तो यहाँ पर हमने जो माउंटेन्स है इसके बारे में हमने पढ़ा. द रॉकी माउंटेन USA means made by rock only. There is no part of soil. Then Mount Fuji in Japan. So this one is the also example of the formation. Okay, formation of the volcanic mountain. If we see the large blocks of land, examples are Syria, Nevada mountain in US, and the Black Forest mountain in Germany. If you see in Syria, so here is the example of block mountain. Note the step track of the mountain. It's also called the step rock. Means हमारी जैसे घर पे पायरिया होती है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप, तो उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है. Did you know high mountain range have glaciers or slow moving a river of ice? Large river originate from these glaciers. तो आप did you know children, if we see these types of the mountain, that one is the covered by ice. So in summer these ice glaciers, we can call the glaciers also, it will be melt slowly, and that ice water, it will comes in a river. So these types of the ice mountain, the format originate to the large rivers. Okay, तो ये क्या करती है, जो इससे जो भी पानी निकलता है, तो ये रिवर्स का बहुत ही अहम पार्ट होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं. See children, in page number 3, the lowland between the hills, a mountain is called valley. If you see in this picture, so here is the two hilly areas, right? So here is the two hilly areas. In the middle is, you can see the river. Okay, so these types of the structure, a valley with a river flowing है ना, through it. So ये क्या है, लो लैंड है, यहाँ पे बीच में क्या है, एक लो लैंड भी है, but land portion is a very little. So the lowland between the two hills, right? So these types of the lowland between the hills or mountains is called the valley. Okay, valley are normally formed by a glaciers or a river varying away the rocks or mountain. A number of valleys have rivers flowing through them. Famous valley in India are the Kashmir Valley and the ब्रह्मपुत्र वैली. तो क्या होता है, इस टाइप की जो वैलीज हो गई,
वो क्या करती है, ग्लेशियर्स यानी कि जो हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, तो वो जो आइस आइस मेल्ट होकर बहकर आता है और इसमें मिल जाता है। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास कहाँ पे है, इंडिया में जो कश्मीर है, कश्मीर से होते हुए जो नदी आती है जिसका नेम है ब्रह्मपुत्र, तो वो एक एग्जाम्पल है वैली का। ओके, what is the passage? The mountain have a low, narrow, natural gaps called the passage. If we see children, the here is the mountain you can see. Okay, so here is the one mountain and here is the one mountain, and here you can see the narrow type space or gap you can see. Yes, here you can see the narrow types of the space and gap. This you can call the passage. Okay, so these types of the passes we can see in Himalayas, connects in Afghanistan and Pakistan. Here we can see. So here is given one example. The Khyber Pass connect Afghanistan and Pakistan. So these types of the mountain and passes can connect the two countries. Okay, so here is given about Afghanistan and Pakistan. Plateau children, we already know the large area of the land that is highest than the surroundings and a more or a less flat at the top. Top से क्या होता है, वो flat होता है. That one look like a mountain only, but mountain have the top peak we can say. But if we see the plateau, so upper portion is the full flatted. It's look like this only. So flat at the top is known as the plateaus. The southern plateau, South India covered almost entire in India peninsula. The Tibetan, तो इंडिया में एग्जाम्पल है एक पेनिसुला का, एक तिब्बत का, है ना. हिमालयाज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. सो जो हाईएस्ट प्लेट्यू है ये भी कहाँ पर है, हिमालय में है ना. रूफ ऑफ द वर्ल्ड to the Columbia and the Colorado plateaus are in the USA. तो ये सारे एग्जाम्पल्स कहाँ के हैं, हमारे यहाँ पे यूएसए में भी ये है. See, Colorado plateau in USA, it's look like this. Then what is the plains? So plains example means like this. Plain area. Whenever we are seeing the plain area, so there you most of the see farmer doing the farming. Then there you can see the big cities covered, है ना, plain areas में covered होती है. Plains are flat lands with a gentle slope, rivers flowing from the mountain bring the fertile soil to the plain, so crop grow well. So these types of the plain areas, जो भी नदी बहकर क्या लाती है, फर्टाइल सॉइल लाती है. फर्टाइल सॉइल मीन्स वो उसमें बहुत ही स्पेशल सॉइल होती है जिसमें जो क्रॉप से बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है. तो
यहाँ इस टाइप के लैंड में फार्मिंग बहुत अच्छे से की जाती है।